Good morning, students. It's time to start the question answers of chapter 11 Earth, Sun, and Moon. First of all, short question answers. First one is, what do you mean by solar system? The sun and 8 planets that orbit it make the solar system. It includes asteroids, comets, satellites, and dwarf planets. So the solar system comprises the sun, 8 planets, including asteroids, satellites, comets, and dwarf planets. Which layer of the earth contains everything essential for life? The crust. The outermost layer where we live. Outermost layer जिस पर हम रहते हैं. It contains everything essential for life. What separates inner planet from outer planets? The asteroid belt. It is present between the orbits of Mars and Jupiter. ये inner planets को outer planets से separate करती है. Inner planets कौन से हैं? Which are nearest to the sun. First 4 planets. Mercury, Venus, Earth and Mars. And outer planets कौन से हैं? They are Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. What causes tides? The gravity of the moon. Moon pulls the water of seas and oceans. What is total lunar eclipse? When moon is completely in the dark shadow of the earth, total lunar eclipse occurs. Earth, sun and moon तीनों एक लाइन में, और जब अर्थ की शेडो मून पे पड़ती है एंड मून इज completely covered by that shadow, it is thus total lunar eclipse. What is an artificial satellite? Man-made object that moves around a planet is called an artificial satellite. Now long question answers. In how many ways does the earth differ from other planets? It has an atmosphere which contains 21% oxygen. It has liquid water on its surface and it is the only planet that supports life. क्योंकि ऑक्सीजन है जहाँ पर वाटर है, तो ये एक ओनली प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, और कहीं भी लाइफ नहीं है, और किसी भी प्लैनेट पे लाइफ नहीं है. एंड इट हैज ओनली वन मून. Describe different layers of the earth. First one is crust. It is the outermost layer where we live. It contains all the essential things required to sustain life. Its thickness varies from 5 km to 70 km. Mantle, it is the middle layer. It is much thicker than the crust. It is made up of solid rock in the upper portion and molten rocks in the lower portion. Upper portion में solid rocks होती हैं. Mainly magnesium and iron is present, but lower portion का temperature high होता है and इसमें molten rocks present हैं जिन्हें हम magma कहते हैं. Core, it has 2 layers, inner and outer. Outer core has molten rocks due to high temperature. इसमें भी magma present होता, and inner core is solid even though it is the hottest part of the earth. Inner layer का temperature outer से भी ज़्यादा होता है, but rocks solid होती हैं due to high pressure. What is the main source of energy on the earth? How do organisms harness energy to sustain life? The sun is the main source of energy on the earth. Okay, हम कैसे यूज करते हैं वो एनर्जी? Plants use solar energy through the process of photosynthesis. वो अपना खाना बनाते हैं in the presence of solar energy. They provide food to all living things. We depend on plants for food.
Even coal and petroleum has stored energy of the sun. So directly or indirectly, we all use solar energy. Describe different phases of moon. The moon does not have its own light. इसकी अपनी light नहीं है. It reflects sunlight and shines. जब sunlight इस पे पड़ती है, it is reflected and moon shines. Its changing shapes are actually the shapes of its lighted part. Okay, the moon never changes its shape. वो अपनी shape change नहीं करता. The changing shapes of moon that we see from the earth are actually the shapes of its lighted part. क्योंकि moon position change करता रहता है, it revolves around the earth and earth revolves around the sun. तो इसके जिस पार्ट पे सनलाइट पड़ रही होती है, ओनली दैट पार्ट इज विजिबल टू अस, और जिस दिन लाइट नहीं पड़ती दैट इज न्यू मून डे, उस दिन हमें मून दिखाई नहीं देती. देन क्रिसेंट मून, जिस दिन हमें आर्क दिखाई देती है. देन हाफ मून, गिब्बस मून, एंड इट इज फॉलोड बाय फुल मून. उसके बाद इसका जो विजिबल पार्ट है, लाइटेड पार्ट है, उसका साइज कम होना स्टार्ट हो जाता है. एंड अगेन आफ्टर 14 days we will see the new moon. These are called different phases of the moon. The changing shapes of the moon that we see from the earth, they are called phases of moon. Now what do you mean by an eclipse? How does a solar eclipse occur? A shadow formed in space when the sun, earth and moon are in straight line is called an eclipse. जब sun, earth and moon तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, then eclipses occur. A solar eclipse occurs when the moon comes between the sun and the earth. सोलर इक्लिप्स कब होते हैं? जब मून सेंटर में आ जाता है, अर्थ और सन के, और तीनों एक लाइन में होते हैं. देन शेडो ऑफ द मून कास्ट ऑन द अर्थ, मून की शेडो अर्थ पे पड़ती है, देन इट इज अ सोलर इक्लिप्स. व्हाट पर्पसेस कैन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट सर्व? देयर आर वेरियस टाइप्स. मिलिट्री सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेस. दे कैन स्पाई, डिटेक्टिव की तरह भी हम यूज कर सकते हैं. दे कैन गाइड मिसाइल्स एंड दे कैन बी यूज्ड एज वेपन्स ऑल्सो. कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स रिले, टीवी, रेडियो प्रोग्राम्स एंड टेलीफोन ट्रांसमिशंस में भी हेल्प करते हैं. हम घर बैठे कहीं भी बात कर सकते हैं, टीवी पे लाइव मैच देख सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं. ऑल दैट इज पॉसिबल ड्यू टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. एंड वेदर सैटेलाइट्स हेल्प टू फोरकास्ट वेदर, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में हेल्प करते हैं. साइंटिफिक सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू स्टडी द अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट. एंड नेविगेशन सैटेलाइट्स हेल्प इन नेविगेशन and can tell the location of people or places. They help ships and aircraft find their way. Now give reasons. The astronauts' footprints left on the moon will remain there for centuries because there is no wind to disturb them. वहाँ पे कोई winds blow नहीं करती. Sometimes earthquakes are felt on the earth's surface. They are caused by sudden release of stress along faults. Okay, they are caused due to movement of tectonic plates. Tectonic plates means plates of lithosphere which are present under the earth's crust. Okay, they move, they slide, और जहाँ पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं उस एरिया को हम कहते हैं फॉल्ट. फॉल्ट लाइन के नीचे कई बार प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, और sometimes the pressure is sufficient to cause sudden jerking movement. अर्थ की शेकिंग होती है, that is called earthquake. So they are caused due to the movement of tectonic plates underneath the earth's crust.
That's all about today. Thank you. Have a nice day.